when I listen to my grandparents' love story or something like that, handwritten letters, जो हमारे song में भी है, those give you different butterflies. So I guess that's something that's missing in today's time. Proposal social media में अच्छा दिखना चाहिए. I don't care like real life whether she had butterflies or not, but yes, even I believe in old school romance. I feel that's beautiful. It has its own charm. किसी को आप में इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे? हाँ तो अप्रोच करिए. That was the question I was wanting to ask. ગુજરાતીમીડિયા.com માં આજે આપણે વાત કરીએ છીએ શાંતનુ મહેશ્વરી અને અશનૂર કૌર સાથે. બહુ જ સુંદર ચહેરા અને એમનું એક બહુ જ સુંદર બ્યુટીફુલ રોમેન્ટિક સોંગ આજે લોન્ચ થયું છે, એટલે આજે આપણે એમની સાથે વાત કરવાના છીએ. વેલકમ ટુ ગુજરાતીમીડિયા.com, શાંતનુ એન્ડ અશનૂર. Thank you. Just before this, I watched the song. It's beautiful. बहुत ही सुंदर गाना है. It's very romantic. Yeah, it is. हम गाने के बारे में ऑफ कोर्स बात करेंगे. मुझे आप दोनों एक के बाद एक ये बताइए कि आपके लिए रोमांस क्या है? Selfless love for someone and making that person feel special. That is romance for me. And मेरे लिए romance is not about big gestures. It's about small things that you do in life. Yeah. Just adding to what Shantanu said, I guess along with that, it's also pushing each other to live up to your best self. Yeah, that's right. And making each other grow and being a part of each other's journey in a very integral way. आजकल ये सोशल मीडिया और ये वो, एंड व्हेन आई टॉक टू यंगर जनरेशन, मुझे सीन पे छोड़ दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ये कर दिया. तो क्या आपको लगता है, और आई एम श्योर जब हम मैं मेरे माँ बाप के बारे में, उनके लव के बारे में सुनती हो, या आप लोग अपने पेरेंट्स के रोमांस के बारे में जब सुनते हैं, डू यू थिंक कि प्यार के जो जरिए हैं या प्यार की जो नज़ाकतें हैं वो बदल चुकी हैं? डू यू फील दैट थोड़ा ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया, ऐसा आपको लगता है? नॉट प्यार, बट मे बी द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन टुवर्ड्स लव. People these days think it's cool not to care, but I guess what is cool is to care. What is cool is to show efforts. And definitely with the internet coming and making everything so convenient, not only for talking, but in everything that we do, right? Even media right now, everything. Internet has kind of boomed the entire industry. But along with that, it's also degraded the gestures you can do for the one you love. So definitely ये काफ़ी fragile हो गया कि अरे सीन पे छोड़ दिया या ये हो गया वो हो गया. We don't really know the circumstance, but these things do affect us. But I guess when I listen to my grandparents' love story or something like that, and I hear things like मैं उसके घर के बाहर wait करता था और I used to write handwritten letters जो हमारे song में भी है, those give you different butterflies. So I guess that's something that's missing in today's time. There's a lot of convenience that has happened, and it's all about दिखावा. Social media पे अच्छा दिखना चाहिए. Proposal social media में अच्छा दिखना चाहिए. I don't care like real life whether she had butterflies or not, but camera should capture it. It has become a bit artificial plastic in that sense. But ठीक है, we are highlighting the bad part of it. Generation जो है वो बड़ी अलग थॉट से है, अलग वे से है, सो उनका वो नज़रिया है. सो यू कांट रियली से व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर एनीवन. इट हैज़ इट्स ओन चार्म. आज लोग बम्बल टिंडर पे भी है जो यूज़ करते हैं. It's a questionable thing. It's a choice that you want to make or you don't want to make. There are pros and cons both. Yeah, so it's each to its own. Yes, even I believe in old school romance. I feel that's beautiful. It has its own charm. And I would love to go via that route. But again, if you feel that's right, go ahead, man. Nobody's stopping you. Each to its own. मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि जब पहली बार इस गाने के बारे में आपसे बात की गई, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स? जो पहली फीलिंग थी वो क्या थी? और अब आज ये गाना रिलीज हो चुका है, लोग उसको देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लवर्स एक दूसरे को भेज रहे होंगे ये. What does this song mean to you? When I've heard the song for the first time, जब मुझे सुनाया गया था गाना, तो I was really impressed. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गाना जो है, it's not a normal song, it has a different vibe to it. और I'm very particular about my music choices. तो मेरे को ऐसे जल्दी से कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है. तो मैंने जब ये पहला गाना सुना तो मेरे को बहुत पसंद आया. The way it has been sung, the way it has been composed.
मुझे स्टोरी लाइन पता नहीं थी कि किस ढंग से हम मतलब एज एन फिल्म करने वाले हैं इसको, ऋषिकेश हरिद्वार, ये भी मुझे कुछ पता नहीं था. आई जस्ट न्यू अबाउट द सॉन्ग. मैंने सुना, मुझे लगा कि कुछ अलग है, एंड इफ सारेगामा इज मेकिंग समथिंग लाइक दिस, देन आई मीन इट विल बी फन टू पुट इन एफर्ट, बिकॉज आई न्यू दैट अगर अच्छा गाना है तो ये भी एफर्ट डालेंगे टू मेक इट visual treat for the viewers also. Yeah, so for me it was heartbreak, but again it was the lyrics that hit me. Maybe at that point of time मैं lyrics ज़्यादा सुन रहा हूँ, पता नहीं. But it hit me. It hit me in a way like I could feel them, you know. So it was lovely. I heard the storyline first, and then I heard the song. So that was even more impactful for me to hear it, because I could connect each and every line of lyrics to the way we're gonna shoot it and the storyline. So the song, of course, I mean the lyrics, as Shantanu said, they're very hard hitting, and they have a very deep meaning attached to it. So no matter what the situation, in some way or the other, you will be able to relate to the song. And I hope people think the same way and they love our song. शूटिंग के दौरान के कोई कहानियाँ, कोई मस्ती, कोई परेशानी, But any memory? like I personally love shooting अच्छा, live मुझे लगा location. मुझे टोन डालना है. नहीं, I love shooting crowd में, बीच में मजा आता है. मतलब I have done that in the past, so मेरे को बहुत मजा आता है. एक अलग nervousness रहती है, एक अलग chaos रहता है. डायरेक्टर भी इरिटेटेड रहता है टाइम्स कि शॉट नहीं दे पा रहा है. But Aditya sir was very sweet. हाँ, he is very sweet. So I'm not saying, मतलब एक टेंशन रहता है ना कि काम खत्म करना है, दिन की लाइट जा रही है, तो वैसा टाइप का. सो एंड व्हेन वी वर शूटिंग इन हरिद्वार, तो हम बहुत सारे लाइव लोकेशन में, लाइक लाइव मार्केट्स है जो एक्चुअल चल रहे हैं. अब क्राउड जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली जो है वो मतलब ऐसा है, दो वी हैव परमिशंस एंड एवरीथिंग, बट सो इट वाज सुपर फन कि उनसे इंटरेक्ट भी करना है, उनको रोकना भी है. तो एट टाइम्स लाइक, अरे गाइस इतना क्राउड आ रहा है, बीच से कैसे लूं मैं शॉट, ये वो, तो फिर यू हैव टू डू समथिंग, एंड यू नो, यू आई एम लाइक शाउटिंग एट पीपल, रुको ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो. एंड इन द मीन टाइम पीपल आर लाइक गेटिंग एनग्रॉस्ड इन दैट. हम लोग यहाँ पे शूट करना शुरू कर रहे हैं. सो यू नो, इट वाज सुपर. छोटी छोटी चीजें जो है वो मस्ती करने का मौका मिलता है, तो ये सब cheap thrills. Cheap thrills. So yeah, I mean, it was super fun to interact with the locals there, and in the same time, you know, have this shoot process going on. I mean, एक बार तो ऐसा हुआ था, we even shared a video. We were shooting on the Lakshman Jhula, and the entire team was on one side because we had to take a wide shot. And सारा frame clear है, we are in the center of the bridge, and a huge group of monkeys starts walking and running towards us. And I got so scared, I hid behind Shantanu, and he is making a video नीचे बैठ के उनका. मैंने बोला मुझे क्या कर confidence रहे हो था यार? कि मतलब बड़े लोग हैं, हमारे ancestors हैं, so they will not really harm us. Yeah, so इसके confidence से I said hi to them, and one of them snapped at me. I was like, Shantanu, you be here. So that was fun. A memorable experience, I guess. And did you guys knew each other before, like, yeah, इस गाने की We वजह से? knew about each other. course, yeah. I don't know about her, but I knew about yeah, her. Of course I did, yeah. So I mean, but I have not seen any of her work or anything. फिर बाद में पता चला कि actually live in the airport same में building. we live in the same building. Yeah. Yeah. That's how Mumbai is. So you know. So, but yeah, I mean, super fun to film the whole process with her. I mean, she's super talented and amazing actress, professional with her approach. So it was super fun to work with. Chilled out. I mean, it was absolute fun. We had a gala time, and you know, I always feel it's like an action reaction for an actor. Whenever the co-star is, you know, very fine at their art and respects their art, gives a thought towards it, you automatically would want to give your best. अरे बड़ा मजा आया. There was a shot on the, what do we call it? The cable cars. Cable cars. So उसमें एक ही छोटा शॉट लगा है. और पहली बार मिले हम लोग. हाँ, मतलब पहली बार शूट करना शुरू किया हम लोग ने. फर्स्ट सीन है वो. Yeah, I want to know about those. Yeah, तो stories. फर्स्ट सीन था, हम लोग को केबल कार में बैठा दिया गया था. हम लोग लाइक हाँ चलो सच धज के आए हम लोग, वेरी नाइस, लाइक चलो लेट्स डू इट, लेट्स किल इट, वी हैव टू शो आवर केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग. सो वी टॉकिंग, एंड लड़की को अलग मजा आ रहा है कि वो लड्डू ठूसते जा रहे हैं. बोला अश्नूर तेरे को नहीं खाना है, बट मतलब मे बी आई लुक वेरी थिन एंड एस एंड आई एम, मतलब बट व्हाटएवर. मतलब 4-5 टेक्स हुए थे उसके, मैंने 4-5 लड्डू अभी भी खिलाना है सर, अभी भी खिलाना है सर, अभी भी खिलाना है सर. वो बोला अरे यार यहाँ पे मतलब फेंक भी नहीं सकते, उस केबल कार में कहाँ नीचे आप किसी की गालियाँ सुनोगे, आप फिर अच्छा नहीं लगता है, पहला दिन है, एज आई सेड.
So I mean, yeah, but yeah, It was fun. That was my favorite part. So पूरे गाने में there are some lovely shots. ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत पसंद है, वेरी क्लोज टू योर हार्ट, कि अरे यार ये सीन करने का बहुत मजा है, और आप तो पानी वानी में से निकल रहे हो बिल्कुल, मतलब Dinchak. And the Ganga Aarti was my favorite, and of course, usi mein Shantanu. It was freezing cold that time, and he still went without any hesitation, any कि मैं नहीं करूँगा, मैं he just went. एक्चुअली दूर से ना ऐसा था कि हाँ करंट नहीं रियलाइज होता है कब पानी का करंट. Of course, till the time you're not. हाँ, तो मैं जब तक अंदर भी गया तब तक लाइक ठंड से यस यू आर फाइटिंग विद दैट होल थिंग दैट इज गोइंग ऑन, बट आपको करंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बट ठीक है. सो जब उन्होंने बोला कि पूरा नीचे जाना है और फिर उठना है, तो जब आप नीचे जाते हो यू आर ब्लैंक राइट, आप शिफ्ट हो गए. सो 3 से 4 टेक में तो ऐसा था कि कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, शांतनु इधर से निकल रहा है. So, मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आप 1 2 3 बोल रहे तब तक में मेरे को पानी उधर तक खींच के लेके जा रहे हैं. हम लोग लाइक नॉट अ स्विमर. तो हमें मेरे को खुद को डर लग रहा है कि बाकी लोगों को भी डर लगा है, बट शॉट तो देना है हम लोगों को. सो लाइक फिर हम लोग ने शिफ्ट किया ये वो, बट यार रखा नहीं पीछे से पकड़ने के लिए, कर ही नहीं सकते, इतना वाइट शॉट दिख जाएगा और उसको भी वो पानी में कैसे के पकड़े, वो भी मेरे साथ खींच के जाएगा. सो इट वाज सुपर चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम इट हैड इट्स ओन fun experience because I was like fighting नहीं इस बार नहीं जाऊंगा. And plus he had to keep his expressions एकदम वैसे कि that was his revelation shot. And सबका ऊपर जब आ रहा हो ना सब ऐसे ही दिख रहे हैं. So I'm like एक तो धुंधलापन से आप आ रहे हो ऊपर से वो स्वैग के साथ. हाँ बट हाँ यू हैव टू मेंटेन दैट स्वैग, और बाल पूरे ऐसे आए हुए हैं, उसको पीछे करो, कितने ही प्रोडक्ट लगाओ, मतलब इट इज गोना कम लाइक दैट. सो इट वाज सुपर फन, but I mean, yeah, it was challenging, but yeah, at the same time, I'm so happy that I could give that shot, and that happened. So yeah. I'm sure our viewers would want to know what's happening in your love life. I don't think they are interested. No? No, I No, don't no? think. Absolutely not. I mean, आप अपने में रहो, हम लोग अपने में रहेंगे. किसी को आप में इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे? हाँ तो अप्रोच करिए. That was the question I was, wanting to ask. Copy paste. Okay, copy paste. Control C, Control V. That's lovely. I love it. So you have spent good time, with each other. You have done this song, friends, same building now. One question that you want to ask her, one question that you want to ask him. What's the first thing now that you want to do now that you have? अरे यार इतने सीरियस क्वेश्चंस थोड़ा ना पूछने होते हैं. अरे फन पूछ रहा हूँ मैं, okay, तो फन जवाब देना, मतलब. First thing what? That you wanted to do after like you turned 18. So what was that thing? हाँ, मेरे को चाकर दुनिया को जो वो बेड़ियों को तोड़कर मुझे कुछ करना है. I've always been very fascinated by bullets. Bikes, because my dad is a rider. So मुझे ये था, सीख तो ली थी मैंने, लेकिन कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी because I wasn't 18. तो my first reel after I turned 18 was riding on a bullet. मैं ये पूछूंगी संजय सर को कब बोल रहे हो मेरे साथ काम करने के लिए? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पोजीशन में हूँ नहीं कि मैं जाकर सर को सजेस्ट करूँ नाम. I'm very honest, she knows that. What next for both of you? Struggle is real and you keep hustling, but yeah, I mean a lot of projects are being offered which are good, which interesting characters are being offered. Right now, yes, obviously Toot Gaya is important because we are out for the promotion of it, and the song is beautiful. We want people to see it, लोगों तक पहुँचे, लोग सुने. इतने लोगों की मेहनत जो है वो सफल होगी तभी जब लोगों तक ये गाना पहुँचेगा, and that is very important because अच्छा गाना है. कभी कभार बहुत ऐसा होता है कि अच्छे गाने निकल जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स विद सारेगामा एंड वी आर मेकिंग एन एफर्ट, both of us, and the entire team is making an effort that it reaches out to the audience, and yeah. There are a few things going on. There are some discussions, some meetings, and there are a few things in the pipeline. So as and when they happen, you guys will come to know. That's lovely. It was wonderful talking to both of you. हम चाहते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स आपका गाना देखें, आपका इंटरव्यू देखें और आपको अप्रोच करें. हम गुजराती में बोलना चाहेंगे. हमारू अगीत बोलो. અમારું અગીત ચોક્કસ જોજો અને ખૂબ પ્રેમ આપજો. Yeah!